Good evening, everyone. So let's start the session. So I think in the yesterday session we have seen about the DNS and how it is working, and then virtualization. So everyone revised the yesterday session, guys, thoroughly. I hope that everyone has revised the session. It won't take much time, so please revise it. So it will be helpful. Otherwise, just listening to the sessions and going back and coming, it is not useful. So please revise the session and come to the next sessions. Okay, it will be more helpful for you. So the first, let's have a quick questions from the previous session. So what is DNS? What is the long form of DNS? What is the long form of DNS? Domain name system, right? Domain name system. So what DNS will do? It will convert. It will convert, as guys, name to the IP or IP to the name. Great. So mostly the DNS functionality will be forward, that is name, it will resolve name into the IP addresses. IP addresses. So in computer world or IT world, every device or every node will have identity, right? So such you like very similar to the people living in a country will have a passport, and they also have the like in our country we have Aadhaar card. So that is your identity. So Aadhaar number is unique for everyone. Yes, yes, guys. Is it unique for everyone? Yes, it is unique for everyone. So that number defines your identity, right? But is it same that everyone like suppose if some like your names, right? So names can be duplicated. Names can be duplicated, but Aadhaar number is unique. So such that the IP address that you are giving to a particular machine will be fixed and unique, and it will be just for that machine. No other machine will have the same IP address over the internet. Getting my point? So वो एक, you can say that it is the unique identification of a machine over the internet or the web. तो वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो मशीन होती है इंटरनेट पे उसका. So that is the IP address. So whenever you are typing the host name, it will convert it into the IP address, correct? It will convert it into the IP address. That is the functionality of a DNS. So whenever you are typing google.com or any domain name into your browser, where it will first look for the IP, where it will first look to for the IP, it will look for IP in the local DNS. First, it will check the local DNS. What happens if it found it if it finds that IP in the local DNS? It will returns that IP, right? So their process completes. Their process completes. But if that IP is not there in the local DNS, अगर IP local DNS में नहीं होता है, तब क्या होता है वो जाता है रूट नेम सर्वर के पास. ठीक है, इट गोज टू द root name server. And what happens in the root name server? Root name server is something that has the root level databases, that is nothing but root zone database. .com, .org, .in, ये किधर है इसका उसके पास मतलब पता होता है, समझ लो, राइट? .com, .in, like that. So out of all those root domains to which it should route, that will be decided by the root name servers. तो root name server क्या बोलता है कि ठीक है .com है तो इसके पास चले जाना. So it goes to the .com class then, right? So that is nothing but a .com is what? .com क्या है? .com, .in, what is this? These all are top level domains. These all are top level domains. So these are the TLDs. And in these top level domains, we have large set of domains, right? We have the google.com, facebook.com. There are so many others. So all those are the domains. So out of that, only one with the google.com will answer. So who will answer it? The IP address of google.com. Who will answer it?
Name servers will answer the IP address. Name server will answer the IP address. So if you want to find the IP address of a particular domain, so which is the utility that you can run in the laptop or browser? One utility is there. If I give you the domain name, I want to find the IP address of that domain name. So which is the utility that you will be using? आप मैंने भी किया था वो, ठीक है। तो लैपटॉप में उसको सिर्फ आपको टाइप करके आईपी एड्रेस निकालना है। आई थिंक ये हमने किया है। एनीवन इज रिमेम्बरिंग? Dig is there, ns lookup is there, very good. So that's what I'm expecting, right? So these are the utilities or the commands that you can run in the Windows or the Linux systems, so to find the IP address. अगर आपका IP एड्रेस चाहिए होता है तब आप क्या करते हो, कमांड्स को रन करते हो और आपको इसके IPs मिलते हैं, ठीक है, डोमेन नेम के IPs मिलते हैं। Got the point? So that is the utility. So if you want to divide the overall resources on a host into smaller sizes or chunks, then what is the method by which you can do this? What is the method that you can apply to do that, dividing the resources into smaller resources types? This division is what we can call it as, it is the virtualization. It is the virtualization. So it will divide the resources that are big resources into a smaller resource sizes. Are you going to divide that physically? Are you going to divide that physically? No, it will not be divided physically. So physically, the network, like whatever resources that you have on a host, that is memory or CPU, those all resources will be fixed. Just you are virtually dividing that. Virtually, you are dividing that. Yes, it could be logically also. So you are virtually dividing that. So there should be someone who is controlling that, right? There must be someone who is controlling this division. So that software name, what it is called as, it is virtualizer, and its examples are, there are so many examples, right? So we have so many like VirtualBox, then also we have the VMware. Yes, got this. So these are all the virtualizers, and also that another name we can also call it as a hypervisor, right? Hypervisor भी बोल सकते हो आप। Now if you are using a host, okay, if you are using a host and on that host you have resources, and on top of that resources you have an operating system like your laptop, simple laptop, it is a traditional system, right? But what I am doing, I am installing a software on top of that operating system that will do the division of resources for me, and I am installing multiple operating system into that laptop. So that is something like a hypervisor. So that type of hypervisor, we have two types. So type 1 and type 2. If you are installing hypervisor on top of operating system, then it is type 1 or type 2. It will be the type 2 hypervisor. If I am installing the hypervisor not on top of operating system but directly on a hardware, then it will be type 1 hypervisor. Then it will be type 1 hypervisor. Nice. So let's start with the hypervisor and the next parts. So let me share my screen. So first I will just see that type 1 and type 2 hypervisor. I will just show you that difference, how it works. So this is the difference diagram here. So let's compare both. Look at here. So there are two types of approaches for the hypervisor. This is the type 2 where we have the hardware. On that hardware we have the host operating system, and that on top of host operating system we have a hypervisor, and that hypervisor will divide the uh, resources into smaller parts like we have seen in the yesterday's session here, right? 256 GB RAM has been divided into 4 chunks of 64 GB, and 64 CPU will be divided into 4 chunks of 16 CPUs.
So this one part we call it as a VM. What is that? What is it name? It is called as the VM. It is called as the VM. What is VM, guys? VM is a virtual machine. What is VM? VM is a virtual machine. This is the virtual machine. So these all are the VMs. These all are the VMs. So what is the function? Like if you want to create a VM or the virtual machine, then it should be on top of some virtualizer or some hypervisor. Getting my point? So VM cannot be directly created on top of that host. So वो अगर चाहे host है पूरा overall host है, so this operating system that is installed on top of hardware, it is called as host operating system. This particular operating system is called as host OS. I will directly write OS. It will be small. So what is this? This OS is nothing but a host OS, and the operating system that you install in the VM, it is called as guest OS. Guest OS. ये सब terminologies पता होने चाहिए before we start our session for the cloud. So this is nothing but a guest OS. सिंपल है. अगरचे ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट के ऊपर है तो क्या होगा आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. If operating system is on top of virtualizer or hypervisor in the virtual machine, is it a physical machine? ये जो 1 2 3 4 है ये physical machine है क्या? No, it is not a virtual machine. It is not a physical machine. This is just logically created out of these resources. So that is called as the virtual machine. And the operating system that you installed in this virtual machine is called as what? Guest operating system. Any difficulty with this? Guest operating system and the host operating system. In the type 2 hypervisor, do we have host operating system? Yes or no? In the type 2 hypervisor, do we have host operating system? Yes. And do we have guest operating system? Of course, yes. Right. In the type 1 hypervisor, what do we have? We only have the guest operating system. Is there any host operating system here? नहीं है. ठीक है. So why which one by observing this, what do you think which one will be the best choice for our servers? Type 1 hypervisor or type 2 hypervisor? Okay, many people will see the type 1. So let's see why it is type 1 not type 2. Let's see. Look. So in this case hardware is there and there is a host operating system and on top of that we have the hypervisor, correct? So hypervisor is considered as one type of application on top of this host OS, correct? So obviously, if you see that hardware, some of the resources of the hardware will be utilized by the host operating system, correct? So some of the resources of a host will be utilized by this operating system. देखो अभी मैंने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है मेरा, सो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो कुछ रिसोर्सेज मेरे जो सिस्टम के हैं वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद फिर हाइपरवाइजर आएगा. फिर ये गेस्ट को जितना भी स्टोरेज या जो भी अपना सीपीयू और मेमोरी है वो बहुत कम मिलेगा फिर गेस्ट को, बिकॉज सम रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड ऑन दिस ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने को भी रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है. सो इफ आई रिमूव दिस host operating system and directly install the hypervisor on a hardware, so there is no need of operating system then. So what happens? You will find more resources and total hardware will be utilized in this case. Got the point? So this will be good architecture. Here they shown this as a host OS, but there is no need of this also. So if you want to access the hypervisor and do some changes, then that will be needed, but we call it as a guest only. So all three are the guest operating system only. Okay.
So these are some Hyper-V, Zen, VMware, ESI, ESX. So these ESI है क्या से ठीक है. These all are the examples of a hypervisors here, right? And these are the hypervisor type 2 hypervisor examples. Got the point? Simple, just difference था एक. ये हम लोग सर्वर के लिए नहीं यूज करते. For server, which type you will be using? Which type of hypervisor you will be preferring? Yes, type 1, not the type 2. So look, type 1 hypervisor directly access underlying machine resources. Type 2 hypervisor negotiate resource allocation with operating system. बीच में operating system भी है. इसकी वजह से क्या होता है? Process slower and less efficient. है ना? तो इसलिए कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए? Type 1. I think now it's crystal clear for you. Yes, guys? Yes. So let's start the session with the cloud. So let me open new one only. Okay. So let's start the cloud basics. Today's session will be mostly the cloud basics, and later on we will just go through the uh, AWS then, right? So cloud basics. Now in this, let us first understand what is pay-as-you-go mechanism, right? Pay-as-you-go mechanism. This is also called as PG, pay-as-you-go mechanism. So tell me guys, what is the pay-as-you-go? Pay for the resources that you are actually utilizing, correct? So the just you need to pay for the resources or the amount of resources that you are actually using. If you are using for 1 hour, then you need to pay just for a 1 hour. That is the case for the pay as you go mechanism. Now next, okay. So this is the pay as you go mechanism. Now if I talk about the resources, what comes to comes into your mind? Resources. If I told you that resources, what is the meaning of resources that comes to your mind? If I talk to you like a resources, very good, Priyas. It could be the CPU, hard disk, then CPU, hard disk, memory, or you can say it as RAM. Now in our AWS, so at any point of time, if I talk about the memory means what? It will be RAM only. ठीक है, जो RAM होता है ना लैपटॉप में, हम लोग इसको RAM बोलते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी नाम है उसका. So please remember that whenever I call it as a memory means not a storage, it is the RAM only. Okay, so it is a RAM. RAM का मतलब समझता है ना क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज होता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज होता है ये, ठीक है. नाउ मेमोरी, हार्ड डिस्क, CPU, storage, then anything else? So many resources, ठीक है. So this is not limited to this, but also there are so many supported resources that we already seen in a first session, right? Resources क्या क्या लगते हैं एक डेटा सेंटर को स्टार्ट करने के लिए, हमको जितने भी रिसोर्सेज का नीड होता है वो सब इसमें आ जाते हैं रिसोर्सेज में. सो आई थिंक दैट pay as you go mechanism and
what is the meaning of resources, you already get an idea, right? So what are the cloud service providers we have seen? Cloud service providers. So we have the AWS. We will list some of them. Azure, then GCP is there, Google Cloud. Then we have, okay, just limit the range to this only. So if someone asks you that, do you know what are the different cloud service providers? You can list out some of them like AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, etc. etc. Out of that, why you are choosing the AWS? Because it is a market leader and we have so many services, and the architecture wise it is good, and its storage service and so many other service which are very famous and people are using more for the AWS. That's why we are using the AWS. We learned the AWS. So if you know the AWS, can you learn Azure or Google Cloud easily? Yes, very easily you can learn these two clouds. Very simple, right? Very simple to learn. If you know the AWS in and out, then it is very easy to learn the Azure and Google Cloud. So that's all about the cloud service providers, right? Now, one more terminology is there, tenancy. Just I am listing out the terminologies here. Tenancy. What is the meaning of tenancy? Suppose you are booking a ride of Ola, so they will ask you about the type of ride that you prefer. So there will be shared taxi type, then dedicated one, then there are so many different ranges. So if you are going with the shared type of ride, then it will cost you a lesser amount. If you go with the special booking, like you are only one in the total ride, so that will be costing you a larger amount, right? So that difference is there. So I think you got the idea what is the meaning of the tenancy. Tenancy can be explained in a manner like, so how you want your resources to be shared among the people. So if you want your resources should should not be shared with any of the people around the internet, then that will be the dedicated one. So it is dedicated to you. So obviously if you want a separate, अभी आप होटल में जाते हो या फिर किधर रूम बुक करते हो, तब आप अगर जो स्पेशल पूरा ब्लॉक बुक करते हो तो ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, करेक्ट? अगर आप रूम में से कॉट कॉट लेते हो, सिर्फ कॉट बेसिस टाइप होता है, तो उसको आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? वो शेयर्ड होता है वो, आप सेपरेट नहीं रह रहे हो, तो आप शेयर्ड में रह रहे हो. So that tenancy part is something like that. Everyone got the part of tenancy? What is the meaning of tenancy? सिंपल है कि आपको कैसे चाहिए रिसोर्स, मतलब किसके साथ शेयर करना है या फिर आपको सेपरेट चाहिए. ओके, तो पैकेज समझ लो आप एक टाइप का कि आपको किस टाइप का पैकेज चाहिए. So there are two types of tenancies available here, right? So one is the share tenancy, as we discussed, that share tenancy. So what happens? The resources or the hardware will be shared among other users, right? So or resources, or you can say that resources or the hardware will be shared among other users. So if I am using I am using AWS, and also you are using AWS. So there might be a possibility that we both are using the same underlying hardware. तो अभी हमने देखा था ना कि एक underlying hardware होता है. जस्ट इमेज देखेंगे, ये देखो इस टाइप का एक हार्डवेयर होता है. तो इस पे मल्टीपल गेस्ट ओएस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, गेस्ट वन, गेस्ट टू, गेस्ट थ्री. इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि गेस्ट वन मेरा वीएम है, मुझे दिया है AWS ने, और गेस्ट टू आपका है. सो व्हाट हैपेंस, गेस्ट वन एंड गेस्ट टू आर ऑन अ सेम हार्डवेयर. दिख रहा है आपको सेम हार्डवेयर यहाँ पे, मतलब एक ही लैपटॉप पे दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? उसने मुझे भी वही लैपटॉप दे दिया, आपको भी वही दिया, बट आप एक काम कर रहे हो, गेस्ट वन हो आप, मैं गेस्ट टू हूँ. नाउ द डिफरेंस इज क्लियर एवरीवन. सो व्हाट इज द शेयर्ड? Yes, that is the shared. Now, second one is the dedicated tenancy. What is the meaning of dedicated tenancy, guys? Simple. Name itself suggests that resources or hardware will not be shared among
users. Resources or hardware will not be shared among other users. Will not be shared among other users, but that might be a possibility that uh, that resources might be shared with you only. मतलब क्या, आपको उसने गेस्ट वन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है और गेस्ट टू जो दिया है वो भी आपको ही दिया है, ये किसी और यूजर को नहीं जाएगा फिर, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट अ डेडिकेटेड वन। डेडिकेटेड मतलब आपको ही मिल जाता है, होल होस्ट आपको मिल जाता है, आपको जो करना है करो उसमें। सो दैट विल बी द case for the dedicated tenancy. Any difficulty with this tenancy wise? Shared tenancy and dedicated tenancy, clear? Okay, so next terminology. If you have any doubt, please put in a chat, right? Why we are not opening the mic for everyone? Because it will be like chaos, right? People will ask some, like some of them might be like opening the mic and going away. So that's we are just not opening the mics, right? So if you have any doubt, difficulties, put it in a chat. We will like answer you. Okay. So that is the tenancy type, and then next terminology is the capex. ये कुछ terminologies हम लोग देख रहे हैं अभी. Capex. So the long form of capex is the capital expenditure. Capital expenditure. So what is capital expenditure? It is the amount that you need for the resources. जैसे कि अभी आपने लैपटॉप परचेस करके लेकर आ गए, ठीक है? If you have purchased your own laptop, then the amount that you are paying to purchase a new laptop, that will be the capex. वो कैपिटल है आपका, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पे किया है. What the point? That is the capital expenditure. So how you can define the capital expenditure? It is the initial expenses that you need to pay for the resources. For the resources. It is the initial expenses that you need to pay for the resources. That is the capex. So next terminology is the opex. Opex. This is something which is the operational expenditure. Operational expenditure. What is operational expenditure? जब आपने लैपटॉप परचेस करके लेकर आ गए अभी, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वो. बट जब आपने लैपटॉप लेकर आ गए, सपोज यू वांट टू मेंटेन दैट लैपटॉप, मेंटेनेंस आ गया कुछ आपको उसमें, सपोज कुछ स्क्रीन का फॉल्ट हो गया या कीबोर्ड का मेंटेनेंस आ गया या फिर कुछ रैम का इशू आ गया, रैम आपको बदलना है या जो भी कुछ काम करवाना है उसका, ठीक है, नॉर्मल सर्विसिंग है, जो भी काम है. सो ऑल दैट विल कम अंडर द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. दिस इज द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. सो द एक्सपेंडिचर और द एक्सपेंसेस दैट ऑकर्स ऑन फ्लाई वेन एवर यू आर यूजिंग अ रिसोर्सेज. जब आप रिसोर्स यूज करते हो ना, तब आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है, दैट विल बी कॉल्ड एज द ओपेक्स. इट इज द expenses needed to maintain the infrastructure. Now look, I think we have seen one example earlier. What was that example? That we have seen एग्जाम्पल कि जब हमने ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया था, तो ऑन प्रीमाइस में क्या होता था, वी हैव सो मेनी एक्सपेंडिचर्स, लाइक वी नीड टू परचेज द सीपीयू, परचेज द हार्डवेयर, परचेज द मेमोरी. तो हमको रैम खरीदना पड़ता था, हार्ड डिस्क लेना पड़ता था, स्टोरेज लगता था, सीपीयू लगता था, सर्वर का पूरा सेटअप आपको यहाँ पे लेना पड़ता था. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड द कूलिंग मैकेनिज्म, देन you need the security, networking, everything you need there, right? So all those things, all those infrastructure you need to purchase, correct? All those infrastructure you need to purchase in order to set up the data center. So that comes under the capex. That all comes under the capex. That is the capital expenditure. This is most likely asked questions in the interviews by the interviewer. Do you know what is capex and opex?
So that's why I'm taking this. OPEX is what? It is the operational expenditure. आपने डेटा सेंटर तो खड़ा कर दिया अभी, ठीक है, आपके पास पूरा सब चीज़ आ गया, सब हार्डवेयर आपने परचेज कर लिया, नेटवर्किंग हो गया, पूरा सेटअप रेडी है अभी. Now what next? Next you need the network administrator. Then you need so many other guys who will be managing it. If something happens like router, मतलब राउटर कुछ हो गया राउटर को, या फिर आपका कुछ और चीज़ चला गया, फिर सपोज इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, कुछ वायर्स का प्रॉब्लम हो गया, जो भी है आपका, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या लगेगा फिर? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. सैलरी किस पार्ट में आएगा फिर ये? Salary for the people will come under which part? OPEX और CAPEX? Yes guys, जो आपको सैलरी देंगे आप, अरे भाई सैलरी तो कैपिटल आने के बाद फिर जब उसको मेंटेन करना है तब आपको ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में सैलरी वगैरह आएगा, है ना. जितने भी आप लोग रखोगे तो उनके लिए आपको सैलरी पे करनी है, तो वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आएगा. सो दीज आर द एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट. अगर सर्वर आपका क्रैश हो जाता है, सर्वर आपका बैठ गया या कुछ भी हो गया सर्वर को, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो भी कॉस्ट लगेंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो किस में आएगा? ये इसमें आएगा, राइट. सो नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. इफ यू आर यूजिंग द क्लाउड, so which one you will like, suppose if you are using, suppose अभी अभी हम लोग दोनों को भी कंपेयर करते हैं. फर्स्ट वी विल सी द ऑन प्रीमाइस. जस्ट गिव मी द आंसर फॉर द ऑन प्रीमाइसेस. टेल मी गाइस, इज देयर कैपेक्स? कैपेक्स है क्या ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? कैपेक्स है क्या? यस, वेरी ह्यूज कैपेक्स यू नीड. वेरी ह्यूज कैपेक्स, बहुत ज़्यादा कैपेक्स लगता है. यस, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको पूरा सेटअप करना है, तो आपको सब खरीद के लाने पड़ेंगे, सर्वर्स वगैरह वगैरह, एंड दैट विल बी वेरी ह्यूज कॉस्ट. देन व्हाट अबाउट द ओपेक्स? ओपेक्स लगेगा क्या आपको फॉर द ऑन प्रीमाइस? डू यू रिक्वायर्ड ओपेक्स? यस, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड. देर इज अ नीड फॉर द ओपेक्स ऑल्सो. यहाँ पे ऐप कैपेक्स भी लग रहा है, ओपेक्स भी लग रहा है, बट थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो सब आपको सैलरी पे करनी है या फिर उसको मेंटेन करना है, वो चीज़ लगेंगी. बिकॉज आपने यहाँ पे कैपेक्स में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो आपको कुछ नया हार्डवेयर लाने की ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है. सो दैट विल बी सम और लेसर फॉर द ओपेक्स. बट इट इज़ देयर, ओके, इट इज़ देयर. बट इफ यू गो विथ दी अनदर वन, व्हाट इज दैट? Cloud. If you go with the cloud, what will happen in the cloud? For the cloud, let me just tell me guys, for the cloud, regarding the capex, is there any capex? No, there is no capex. कुछ भी खरीदना नहीं है आपको, जीरो. If you might have that capex, then you might not be learning the AWS. Yes, because capex लगता है तो कोई करेंगे ही नहीं. अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको 1 लाख का सर्वर परचेस करके लाना है और उस पर काम करना है. So who will going to pay that and learn the AWS? No one, right? So there will be no capex. Got the point? There will be no capex. Got the point? Next is the OPEX. OPEX का क्या है बोलो? What about the OPEX? OPEX will be pay as you go, right? There will be OPEX that is needed, right? It is required here. It is required here. But less OPEX. जस्ट आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करना है, ये वो चीज़ है. बट आपको मंथली बिल पे करना है AWS का. जो भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे क्लाउड में, तो उसको आपको पे एज यू गो पे करना है. बट यहाँ पे ऑपेक्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द ऑन प्रीमाइस, ठीक है. थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट देर इज द ओनली ऑपेक्स इन केस ऑफ क्लाउड. सो इन द क्लाउड, डू वी हैव कैपेक्स? क्लाउड के लिए कैपेक्स है क्या? नो, वी डोंट हैव द कैपेक्स, राइट. ओनली वी हैव द ऑपेक्स. आई थिंक यू गॉट दिस सिनेरियो हियर, ओके. So no doubt with this basics. Shall we move on? Yes, guys. Okay. Let's move on further. Now the next part here, it is the deployment models of the cloud computing. Deployment models of cloud computing. Just small topics है ये, इतना कुछ है नहीं इसमें. Just you need to remember deployment models है ये. Look, अभी अभी जैसे हमने बोला है कि some of you have answered like IBM cloud is one of the cloud, right?
IBM भी एक क्लाउड है. But earlier, what IBM company was doing, they have created their own infrastructure and they used that infrastructure for their company. तो उनका खुद का ही था वो, तो वो किसी को देते नहीं थे. So that will be reserved. Like अभी आपका आपने एक लाइक कार परचेज किया आपने खुद. ओके, आपने पर्सनल यूज के लिए कार परचेज किया है. इज इट फॉर पब्लिक गाइस? इज इट फॉर पब्लिक? इफ यू परचेस्ड अ कार, are you going to use it for a public? No, because you purchase it for personal use. But if you purchase the car for like doing the business, right? जैसे कि ओला उबेर है, तो उनके टाइप से आपने क्या किया, वो कार परचेज किया है. सो what you will do, that car will be public or the private? Definitely it will be public, so anyone can have access to that car. So if you got like they want to go anywhere, they will call you and you can just charge them on demand, and that will be in their custody. So that will be like it is public, right? But if you have your own car, you will be maintaining it, you are doing work around it, so you are not going to give that car to anyone, right? So that will be personal and public, and like that. So the same thing happens here also. If you have your on premise infrastructure, like you build the infrastructure and data center, आपने एक डेटा सेंटर बना लिया, फिर उस डेटा सेंटर को किसको एक्सेस देना है, ये डिपेंड करता है आपका किस टाइप का मॉडल था डिप्लॉय करने का. ठीक है? जैसे आप कार परचेस करते हो तो तब आप सोच के करते हो ना. अगर चाहे आपने बस खरीदी किया है, तो बस आप इसके लिए खरीदी करते हो क्या, पर्सनल यूज के लिए? Are you going to purchase a bus or truck for your personal use? No, it has some meaning. So when you are deploying the cloud, that there should be some meaning behind it. So जब आप infrastructure deploy करते हो, तब उसके backend में आपका एक meaning होता है कि किसके लिए कर रहे हो आप, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो या फिर किसके लिए कर रहे हो, वो सब. तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस, देयर आर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. सो बहुत सिंपल है ये, जस्ट एक बार लिसन करना है इसको. सो देर आर few models, so I will just list out. Public cloud, public cloud. Next is the private cloud, private cloud. Next is the hybrid cloud, hybrid cloud. Nowadays, this is very popular, hybrid cloud. Another one is the community cloud, community cloud. So let's understand one by one. Public cloud, name itself suggests that public, anyone can access it, right? Public है ये पूरा. जैसे कि अपना महाराष्ट्र में होगा तो MSRTC का है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेन होता है. सो दैट विल बी द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट? So anyone can book the ticket and they can travel. That is called as the public transport. So the same way we have a public cloud. So if you want a resources, you can just book the resource and you can use that resource. So that is a public cloud. So tell me guys, public cloud is accessible to everyone or it is limited to one person? It is open to all. This is open for all guys. Anyone can access, open for all. Those who have the internet, they can access the public cloud. This is open for all. And if it is open for all and you are using it and you are paying, suppose if I am like going, I am booking the ticket for a train journey. So if I am booking the ticket for a train and I reached my destination, then if something happens in between to the train and there will be some maintenance, so who is going to maintain that train? Who is going to maintain that train or public transport? That particular body, right? गवर्नमेंट और जो जिसका भी है वो वही मेंटेन करेगा, राइट? इफ यू आर गोइंग विद अ प्राइवेट बस से भी कोई ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रेवल्स होती है तो उससे जाता है. तो इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बस and there will be some maintenance, so who is going to do the maintenance? That particular regulatory body or that owner. Yes, good. So he will be like doing the maintenance. So that happens with the public cloud also. It is open for all, you are paying on demand just for the pay as you go mechanism. But what happens if server सर्वर खराब हो गया, राइट? सीपीयू उड़ गया, उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, इन्हीं कुछ भी उसमें दिक्कत आती है, तो हु इज गोइंग टू मेंटेन इट? मेंटेनेंस कौन करेगा यहाँ पे अभी?
तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होगा ना, तो वो, राइट, हु विल डू द मेंटेनेंस हियर? मेंटेनेंस विल बी डन बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स। जो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर होगा, AWS है, गूगल है, या फिर एजूर है, वो इसको मेंटेन करने का काम करेगा। उसमें सर्वर का क्या इशू आता है, जो भी इशू आता है वो देख लेगा इधर, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। So maintenance will be done by the cloud provider. So this is open for all. And how you are paying? Open for all, and you need you you just you just need to follow and pay as you go. समझ में आ गया अभी? पेज ही लिखा तो समझ में आ रहा है ना अभी? पे एज यू गो, जितना आपने यूज किया है उतना पे करना है आपको, बस, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना है यहाँ पे। मेंटेनेंस कौन करेगा? कुछ इशू होता है, सर्वर बंद हो जाता है, सर्वर में कुछ भी इशू आता है, हार्डवेयर फेलियर होता है, तो उसको बदलने का काम किसका है? तो क्लाउड प्रोवाइडर का है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज द प्राइवेट क्लाउड। नाम ही सजेस्ट करता है, दिस इज द डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड टू सिंगल सिंगल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। एंड टेल मी गाइस, एज इट इज डेडिकेटेड टू सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कार है, आपने परचेज किया है, या फिर आपका लैपटॉप है, सपोज यू हैव अ लैपटॉप एंड देर इज सम इशू हैपनिंग इन योर लैपटॉप। सपोज आपका रैम जो है तो वो खराब हो गया, आईसी उसका चला गया, तो हु विल बी रिपेयरिंग इट? You, right? So as you have your own laptop, so you need to repair it, you need to maintain it. So the maintenance part will be taken care by whom? Maintenance part will be taken care by the same organization or the private cloud owner, right? जो भी cloud owner है वही खुद करेगा, right? So you need to take care, right? You need to take care because you are having your own cloud। जो भी ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो इसमें ही आता है, प्राइवेट क्लाउड में। तो ये आपको ही देखना है, इसमें कुछ इशू आता है तो वो आप ही देखते हो, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड, सो नेम इटसेल्फ सेज इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो कभी कभी अभी क्या है ना, मोस्टली कंपनीज का पहले से ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो ऑन प्रीमाइस में होता है, प्लस वो क्या करते हैं, पब्लिकली एक क्लाउड प्रोवाइडर ले लेते हैं कुछ, मतलब ऑफलोड करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि AWS क्लाउड है, एजूर है, गूगल है, तो उसमें से कोई भी एक क्लाउड ले लेते हैं। और उनके पास एक पहले से एक उनका ऑन प्रेमाइस में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही है। सो दैट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो कम इन द हाइब्रिड क्लाउड। एंड सम कंपनीज विल प्रेफर टू गो विथ मल्टीपल क्लाउड्स लाइक AWS, एजूर, दोनों को भी यूज करते हो एक ही कंपनी में। सो दैट कुड बी द हाइब्रिड। सो हाइब्रिड मीन्स व्हाट? इट कुड बी द पब्लिक प्लस पब्लिक, मतलब दो पब्लिक भी हो सकते हैं, ये हाइब्रिड ही होता है। एक पब्लिक सपोज AWS है, दूसरा है सपोज एजूर, सो इन दैट केस इट विल बी द हाइब्रिड। इसको हाइब्रिड बोल सकते हो आप, AWS और एजूर। सो नेक्स्ट, इट कुड बी द पब्लिक प्लस आपका जो ऑन प्रीमाइस है, सो पब्लिक प्लस प्राइवेट, अगर ऐसा है तो इन दैट केस इट विल बी हाइब्रिड। सो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ भी। तो ये पर्टिकुलरली सिंगल टाइप का नहीं होता, इसमें दोनों भी होते हैं। So in this case, depending upon the type you are using, so प्राइवेट का तो आपको देखना है, पब्लिक का कौन देखेगा? जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो देखेगा, मेंटेनेंस पार्ट। सो नेक्स्ट इज द कम्युनिटी क्लाउड। सो क्या होता है कि जैसे अभी कुछ लोग होते हैं कि जिनको कि सपोज आपने एक कार परचेज की है, आपके चार फ्रेंड्स हैं, चार फ्रेंड्स ने मिलके एक कार परचेज किया है, बिकॉज आपको बहुत अच्छा कार लेना था, आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया, चार आपके दोस्त लोग मिलके एक कार परचेज किया आपने। सो टेल मी गाइस, दैट कार बिलोंग्स टू यू, राइट? वो जो चार लोग हैं ना, वो सबका उसमें शेयर है। सो 25-25% सभी का उसमें शेयर है। सो एवरी वन इज ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। एंड टेल मी गाइस, इज इट बिलोंगिंग टू सिंगल पर्सन और ऑल फोर पर्सन? इज इट बिलोंगिंग टू सिंगल पर्सन और ऑल फोर पर्सन? वो सब की है ना, चार ही लोग की है वो। तो ये तुमने पार्टनर में लिया है ये कार, चार लोगों ने मिलके एक कार परचेज किया है। सो इफ समथिंग हैपन्स टू दैट कार, सपोज कुछ मेंटेनेंस निकल गया, सपोज उसका टायर बदलना है आपको, ठीक है, यू नीड टू रिप्लेस अ टायर। सो इन दैट केस, हु इज गोइंग टू पे? हु इज गोइंग टू पे? ऑल नीड टू बी पे।
because it is belonging to all four members and you all need to pay for that particular maintenance. तो मेंटेनेंस कौन करता है कम्युनिटी क्लाउड में? तो सेम टाइप इधर भी है। तो जो अपना ये होता है क्या बोलते हैं डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर को बनाने में बहुत कुछ लगता है। अभी आपको एक सर्वर का कॉस्ट मैंने बताया कि कुछ नियर अबाउट लैक्स में होता है। तो इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व दैट टू मेक मेक अ बिग डेटा सेंटर इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं होता। तो तीन चार कंपनीज क्या होती है, कंबाइनिंगली एक क्लाउड बनाती है या डेटा सेंटर खड़ा करती है और उसका मेंटेनेंस भी चारों मिलके करते हैं। ठीक है। सो दैट विल बी created or used by, so it is open for that particular group of organization, right? So क्या करते हैं, some group of organizations organization will create the will create the infrastructure and maintenance कौन करता है फिर? Maintenance will be done by same group of organization. So nowadays, this type of community cloud is no more like using people because public cloud is so much popular. So many people are using the public cloud. So any difficulty with this deployment models of cloud computing? तो किस तरीके से आप deploy करते हो वो? एक है public cloud which will be open for all, anyone can access over the internet, कोई भी इसको access कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, जितना यूज करेगा उतना आपको पे करना है, उस केस में आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो इसको देख लेगा। प्राइवेट क्लाउड खुद के लिए आपने बना लिया है, जैसे कि आपकी खुद की गाड़ी है तो उसको मेंटेन भी आपको ही करना है, राइट। सो अभी हाइब्रिड क्लाउड आता है, आप मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स या फिर पब्लिक प्राइवेट का कॉम्बिनेशन इसमें यूज कर सकते हो। कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, कुछ ग्रुप रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोग क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं खुद से, बट दिस इज नो मोर यूज nowadays, but earlier this will be very popular when there will be no public cloud or something like that. Got the point? Simple terminologies आज हम लोग देख रहे हैं so that we can start fresh to the cloud, right? Even though you don't know cloud, still you are understanding what is the meaning of cloud now, right? Yes guys, everyone? Yes. So I'm just expecting answers from all those who are new to the cloud. So got the point here? सिंपल है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स तुमको कोई पूछेगा नहीं, ये theoretical सेशन है अभी थोड़ा स्टार्ट में, बट यू विल नो वन विल आस्क यू दिस theoretical टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट ये चीज मालूम होनी चाहिए सब चीज, ठीक है। व्हाट इज पे एज यू गो मैकेनिज्म, व्हाट इज कैपेक्स ओपेक्स, शेयर टेनेंसी क्या होता है, डेडिकेटेड टेनेंसी क्या होता है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। So it will be very easy if you appear for the interview and you know these basics. So let's start with another model, that is the service models. So service models of cloud computing. So what are there in the service models of cloud computing? अब ये सर्विस मॉडल एग्जैक्ट सर्विस मॉडल्स नहीं है अभी, थोड़ा अभी इसमें मॉडिफिकेशंस आए हैं, मतलब इतना सेपरेट जो बोलते हैं ना कि टाइट बाउंड्स नहीं है। तो अभी हम लोग एक बाय वन देखेंगे, जस्ट ओवरव्यू समझ लेंगे कि क्या होता है, but you don't have to go in depth of these service models. Just like deployment models, we will just learn the service models. अगर कोई पूछता भी है तो आपको पता होना चाहिए। What are the service models? IaaC. This is called as infrastructure as a service. Infrastructure as a service. ठीक है, IaaS आएगा इधर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो नाम में ही सब कुछ है तो कुछ तुमको याद करने की जरूरत भी नहीं है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जो है ना मॉडल सब, ये जस्ट कुछ फ्यू मॉडल्स है, अभी तो ऐसा है कि एनीथिंग एज अ सर्विस ऐसे भी आ गए। सो डोंट वरी, बट दीज आर द बेसिक्स, सो यू नो दिस, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। एक आपको बाइफर्केशन मिल जाता है कि किस किस टाइप का सर्विस है AWS में, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है।
So these are the service models of cloud computing. What are those? Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. There might be interview questions for this also. That service models. What are the different service models? So you can answer like this: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So I will just copy one diagram. So let me copy it. I have that from the internet. So let me close this and I will paste it here. Look, दिस इज नॉट एग्जैक्ट बाइफर्केशन, मतलब ऐसा एकदम ये ऐसे नहीं होता है. देखो आपके पास लैपटॉप है अभी. यस. तो लैपटॉप में हार्डवेयर है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं. तो अभी सर्वर में कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको. अभी हमने एक लिस्ट किया था, आई थिंक 1 or 2 days बिफोर. लेट मी टेक दैट डे वन. देखो ये डे वन का डायग्राम है. यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया था ना. स्पेस था, कूलिंग, मेमोरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्किंग. तो ये सारा रिक्वायरमेंट था डेटा सेंटर का. तो अभी ये जो सर्विस जो देता है अभी अपने को, AWS क्या करता है, पब्लिक क्लाउड की सर्विस देता है. सो दैट हाउ एट व्हाट लेवल इट इज गिविंग अस द सर्विस, इट इज डिफाइंड बाय द सर्विस मॉडल्स. तो अभी आप जब ये देखते हो यहाँ पे इसमें, तो नेटवर्किंग, एवरीवन नोज द नेटवर्किंग. क्या होता है नेटवर्किंग? नेटवर्किंग है तभी तो सब चीज चल रहा है, राइट? इंटरनेट पे आपका एक्सेसिबल है. सो दिस नेटवर्किंग. देन दिस इज द स्टोरेज. स्टोरेज पता है सबको? स्टोरेज जो भी वॉल्यूम, हार्ड डिस्क जो भी होता है उसको स्टोरेज बोलते हैं हम लोग. सर्वर्स, जो भी आपका CPU जो भी लगने वाला है वो सर्वर देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्वर्स. वर्चुअलाइजेशन. नाउ आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन. हाँ. हमने इसलिए ये जो पहले हमने जो देखा ना, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग दिस अर्लियर. ओके. सो OS, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पे देखो आप, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर OS का लेयर है, दिख रहा है? सो इज इट टाइप 1 और टाइप 2? वर्चुअलाइजेशन के ऊपर OS है, that means it is a type 1, right? So these are all hardware elements, and on top of that virtualization is there. That's why it is a type 1. If OS is there and on top of OS we are installing some software of virtualization, then it is a type 2. So अभी ये type 1 है, तो virtualization हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. ठीक है. अभी यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं है? ये पॉइंट तक, ऑपरेटिंग सिस्टम तक. देखो, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मिडलवेयर एक मीडिएटर होता है आपके लैपटॉप में, सॉरी सर्वर में. तो वो आपका जो भी प्रोग्राम होता है तो उसको एज अ मिडलवेयर बोल सकते हो आप उसको. ठीक है. ये रन टाइम इसमें जावा होता है, .NET होता है, जो भी आप कोड लिखने वाले हो तो उसका वो रन टाइम बोल सकते हो आप. देन डेटा. डेटा मतलब क्या है आपका? जो भी डेटा रहेगा, जैसे कि आपका कोड है. ठीक है. आपका कोड है, आपने यूजर्स का कुछ डेटा उसमें लेना है आपको, तो वो सब इसमें डेटा लेयर में आता है. उसके ऊपर क्या होता है आपका? एप्लीकेशन. हमने देखा था ना यस्टरडे कि एप्लीकेशन लेयर, फिर डेटाबेस. तो ये ऐसा है, एप्लीकेशन है, फिर यहाँ पे डेटाबेस है. सो एप्लीकेशन एंड डेटा, दीज आर टू लेयर्स. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस मच, राइट? एप्लीकेशन डेटा तो समझ में आ रहा है. और रन टाइम, मिडलवेयर, ये सब रिलेटेड टू द एप्लीकेशन दैट इज बिल्ड. अगर जो HTML है तो यहाँ पे रन टाइम और मिडलवेयर चेंज हो जाता है. अगर यहाँ पे .NET का है तो .NET के रन टाइम मिडलवेयर आते हैं. समझ रहे हो ये चीज? सो अभी सपोज, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था फर्स्ट सेशन में कि हम लोग एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट? सो इन दैट चैट एप्लीकेशन, इफ यू हैव योर ओन डेटा सेंटर, ठीक है, तो आपके पास आपका खुद का डेटा सेंटर है, तो कौन मैनेज करेगा? टेल मी गाइस. नेटवर्किंग कौन मैनेज करेगा? खुद का डेटा सेंटर है आपका, राइट? आपने खुद ही बनाया डेटा सेंटर, और उस पे आपको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है और आपको यूजर्स को देना है. सो इन दैट केस नेटवर्किंग विल बी मैनेज बाय यू. Then storage will be managed by you. Servers, virtualization, OS, middleware, runtime, data, even application that you have created, all the thing, ये सब चीजें आप खुद देखते हो. So that's why in the on premises, if you are using on premises, यानी कि आपका खुद का डेटा सेंटर है, in that case you are going to manage. दिख रहे हैं क्या? पे लेफ्ट में you manage लिखा है, दिख रहे हैं? और shall I zoom in? Look here. So who, you are managing all these layers.
सो ये सारों का ध्यान कौन रखेगा? आपको ही रखना है, ठीक है? एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय यू। सो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग हैपन्स टू द स्टोरेज। अगर चाहे आपका स्टोरेज क्रैश होता है, स्टोरेज अगर चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको, करप्ट हो जाता है या फिर स्टोरेज कुछ हैक हो जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी यहाँ पे, ठीक है? नेटवर्क डाउन हो जाता है तो किसको बोलोगे आप? You are going to manage it in this on premises. So everything will be taken care by you. Correct? Any doubt in this on premises? सिंपल, आपका खुद का लैपटॉप है, आपको ही देखना है। अगर आपका नेट नहीं कनेक्ट होता है तो आपको ही उसको देखना है, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स विल बी मैनेज्ड बाय यू इन द केस ऑफ ऑन प्रीमाइसेस। द सेम थिंग हैपन्स फॉर द क्लाउड आल्सो। तो क्लाउड का ये मॉडल है जो कि ऑन प्रीमाइस पे अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय यू। सो यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। सो व्हाट हैपन्स इफ you are using this infrastructure as a service model? So infrastructure as a service model, तो इस केस में क्या होता है देखो, networking, storage, servers, virtualization, all this comes under the infra पता चलता है क्या होता है इंफ्रा? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज लगते हैं ना कंपनी को, जो कि लैपटॉप जो हम बोलते हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। तो हार्डवेयर में क्या आता है? नेटवर्क आते हैं, स्टोरेज आते हैं, सर्वर्स आते हैं, देन वर्चुअलाइजेशन, ये सब क्या होता है? हार्डवेयर में आता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बोलते हो तो एडब्ल्यूएस क्या करता है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस लेता है। क्या बोलते हैं? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, यहाँ तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करता है? एडब्ल्यूएस। दिस इज मैनेज्ड बाय होस्टिंग प्रोवाइडर। यहाँ पे लिख के भी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैनेज्ड बाय होस्टिंग प्रोवाइडर। सो दिस विल बी टेकन केयर बाय एडब्ल्यूएस। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी देखो आपने सर्वर लॉन्च कर लिया, सर्वर आपको लॉन्च करने के बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल ली, आप यूज़ कर रहे हो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को। सपोज ओएस क्रैश होती है, ओएस कुछ खराब होता है, ओएस में कुछ फॉल्ट आता है, ओएस को अपडेट आते हैं, तो ये अपडेट किसको करना होता है? यू नीड टू मैनेज दिस अपडेट्स एंड ऑल। कुछ सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, जैसे अभी मेरा ये सिस्टम है, अभी जैसे मैंने ये सेटिंग्स में गया मैं, ठीक है? ये विंडोज़ का सिस्टम है मेरा नॉर्मल। विंडोज़ अपडेट पे मैं जैसे जाता हूँ, चेकिंग फॉर अपडेट दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर कुछ अपडेट्स होंगे तो यहाँ पे मुझे वो लिस्ट करेंगे अपडेट्स, अगर नहीं होंगे तो अप टू डेट बोलेंगे। सो ये मेरे को किसको करना पड़ता है? देखो अभी यहाँ पे एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट आ गया मेरा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के लिए। अभी इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया। अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता, अगर इसके रिलेटेड कुछ इशू हो जाता, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपडेट्स एंड ऑल? So I will be responsible, right? I am managing it, right? So no one is going to manage this for me. तो अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैं ही मैनेज करूंगा, मिडलवेयर, रन टाइम, फिर डेटा। अभी एप्लीकेशन आपने बनाया है तो डेटा तो एडब्ल्यूएस नहीं देगा ना, तो एप्लीकेशन तो आपका ही है, तो एप्लीकेशन डेटा सब चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी है। आई थिंक नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको समझ में आ गया कि इंफ्रा आपको एडब्ल्यूएस देगा। जस्ट आई एम कॉलिंग एडब्ल्यूएस बट इट विल बी गिवन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है? तो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो सकता है, ये सेम है सबके लिए, ऐसे नहीं कि एडब्ल्यूएस के लिए सेपरेट है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खाली एडब्ल्यूएस या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर देगा, और बाकी सब चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप सपोज जावा एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, तो जावा के लिए जो भी डिपेंडेंसीज लगने वाली है, किसको इंस्टॉल करनी है अंदर? सर्वर के अंदर आपको खुद को ही इंस्टॉल करनी है अंदर, राइट? So all those things need to be installed by you. So you are going to manage the infrastructure here. What the point? Infrastructure as a service is clear, everyone? So infrastructure will be managed by the क्लाउड प्रोवाइडर और द AWS। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हार्डवेयर पार्ट जो भी रहते हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, विल बी मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, एंड ऑल अदर पार्ट्स that will be operating system, middleware, runtime, data, application will be managed by you. सो नेक्स्ट इज द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है? आपको एडब्ल्यूएस क्या करता है? रेडीमेड दे देता है प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म होना और इंफ्रास्ट्रक्चर होना, इसमें क्या होता है देखो, अभी प्लेटफॉर्म में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके मिलती है, उसके ऊपर मिडलवेयर और रन टाइम भी मिलता है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। सो अभी सपोज आपके पास एक जावा एप्लीकेशन है, या फिर आपको नॉर्मल अगर जो पता होगा कि पीएचपी में वेबसाइट बनती है, यस और नो? पीएचपी एक लैंग्वेज है, सो उसमें क्या होता है? वेबसाइट्स क्रिएट होती है।
सो PHP के लिए आपको PHP के पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। PHP के कुछ डिपेंडेंसीज होती है, वो भी आपको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। देन यू कैन लाइक कीप योर डेटा ऑन अ सर्वर, मतलब आपका जो भी कोड है या आपकी जो भी वेबसाइट है उसका डेटा आप वहाँ पे सर्वर पे रखते हो। फिर जो भी सर्वर को एक्सेस करता है तो उसको वेबसाइट दिखती है, लाइव होती है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड dependencies for the PHP and the runtime everything will be pre-installed। तो जैसे आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टाइप की सर्विस लेते हो, उस केस में आपको ये पूरा रन टाइम तैयार मिलता है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका कोड उठाना है और सर्वर पे रखना है, बस खत्म। यहाँ पे सिर्फ आपको कोड रखना होता है, नथिंग मोर देन दैट। आपको यहाँ पे ओएस देने की जरूरत नहीं है, ओएस को पैच आ रहा है क्या, ओएस अपडेट हो रही है क्या, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं। आपको उसके क्या डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी इंस्टॉल करके मिल जाती है। सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब आपका काम जो है ना कम कर रहा है। देखो, ऑन प्रीमाइस में सब काम आपको करना पड़ता था, आपका फोकस एप्लीकेशन पे था क्या उस टाइम पे। सपोज मेरा एक चैट एप्लीकेशन है, तो चैट एप्लीकेशन को जितने जितने एफर्ट्स मेरे को लग रहे थे उससे ज्यादा एफर्ट्स तो मुझे ऑन प्रीमाइस को पूरा मैनेज करने में लग रहे थे। व्हाट द पॉइंट। सो यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ रहा था यहाँ पे। फिर AWS ने क्या बोला कि ठीक है ये काम तुम मत करो, ये नीचे का जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हम लोग आपको देंगे। ठीक है, तुम खाली फोकस करो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, थोड़ा काम कम हो गया इसमें। फिर आगे आते हैं प्लेटफॉर्म। AWS ने बोला कि ठीक है आप ऑपरेटिंग सिस्टम का तो क्यों टेंशन लेते हो, वो भी हम लोग देंगे आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे। फिर उसके बाद आपको पूरा ये प्रोवाइड करेंगे, मिडलवेयर, रन टाइम, आपको PHP भी इंस्टॉल करके देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका PHP का जो भी कोड है वो खाली आपको रखना है वहाँ पे। तो जैसे ही आप रख दोगे तो आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग लाइक प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपको उस पर सिर्फ कोड डिप्लॉय करना होता है। दिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज मोस्टली यूज्ड बाय द डेवलपर्स, बिकॉज उनके पास कोड होता है, उनको ये पता नहीं होता है नीचे वाला कुछ भी, रन टाइम कैसे करते हैं इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करते हैं, ये नीचे के कुछ भी पता नहीं होता है उनको। तो वो लोग क्या करते हैं, जस्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टाइप की एक सर्विस होती है AWS में, वो परचे वो ले लेते हैं, उस पर डायरेक्ट कोड रखते हैं, और उनका जो भी रहता है एप्लीकेशन वो लाइव हो जाता है इमीडिएट। तो यहाँ पे एफर्ट्स कितने कम लग रहे हैं देख रहे हो, बहुत कम एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपको कोड लिखने का एफर्ट्स है, जस्ट उतना ही है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट अभी आता है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, आपको कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्टली इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आपको AWS या फिर कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको दे देता है। आपको जस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना है। एवरीवन इज यूजिंग द गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सब लोग यूज करते हैं। आपको पता है क्या उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा एप्लीकेशन लॉजिक है, कौन सा रन टाइम होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो लोग। आपको कुछ पता नहीं होता, आप डायरेक्टली क्या करते हो, सॉफ्टवेयर यूज करते हो। सो दैट इज वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू कैन से विद द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऐसे बहुत सारे हैं, डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर दे देते हैं, आपको सिर्फ यूज करना है सॉफ्टवेयर। जब तक आप यूज करोगे ऑन डिमांड आपको प्राइस पे करनी है, उसके बाद आपको बंद करना है, तो आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके आपको बंद करना है। Got the point? Nowadays, this is very popular in a market that is a software as a service. Got the point? So यहाँ पे कुछ भी आपको टेंशन नहीं है, आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर ही मिल जाता है, आपको यूज कर रहे हैं बस, दैट्स इट। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है। नाउ टेल मी, इफ आई आस्क यू in which of these four different scenarios you can have more customization। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ इसमें कस्टमाइजेशन, या फिर आपको ज़्यादा इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि मुझे, हाँ वेरी गुड, मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से सब चीज़ मतलब कस्टमाइज करके लेना है। तो कौन सा ज़्यादा रहेगा, ऑन प्रेमाइस में आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन हो सकता है। आप अपने हिसाब से नेटवर्किंग रख सकते हो, अपने हिसाब से आप सर्वर्स बना सकते हो, आपको जो टाइप चाहिए उस टाइप से ले सकते हो, वर्चुअलाइजर आप खुद चूज कर सकते हो। बट AWS में है ऐसा चांस कहीं कहीं पे कि आपको वर्चुअलाइजेशन या सर्वर, तो ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ यहाँ से ऊपर की बात कर सकते हो बस। यस, सो दैट you have more customization here but very less customization here। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो आपको कस्टमाइजेशन कुछ है ही नहीं, जो देंगे वो लेना है आपको इधर। ठीक है, सो दैट इज वेरी लेस कस्टमाइजेशन हियर। नाउ as I go with the on premises, I am getting so much customization. Okay, I am getting, what is happening?
control down. Just wait, I will just save it. Okay, leave it. So just from the on-premises to the software as a service service models. In on-premises we have very like we have so much customization, but यहाँ पे overhead कितना है on premise को manage करने में? We have lots of overhead. So यहाँ पे आपको overhead ज़्यादा है, काम ज़्यादा करना पड़ेगा. Software as a service में overhead कम है, but less customization. So I think you are now able to understand how it works, right? So these are the cloud computing models, like deployment models and the service models. Yes, guys? Any difficulty in the today's session? So we have just seen the basics of the cloud computing and all. So from the tomorrow, we will just discuss about the AWS global infrastructure. तो AWS किस तरीके से है, उसका global infrastructure कैसे है, और वो क्या क्या services देता है globally, वो सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे. Tomorrow will be the फाइनल क्लास फॉर द बेसिक्स ऑफ अ क्लाउड एंड AWS. तो उसके बाद हम डे आफ्टर टुमारो वी विल बी डायरेक्टली jumping into the creation of AWS account and start with the AWS services, right? So even if these are the demo sessions, we are not calling it as a demo sessions. These are regular sessions only. Why we are keeping it for the demo? Not to like make some publicity or make like people feel comfortable. We are not making for that. This is demo sessions only to decide for you like to continue the sessions or not, that are you ready for the sessions or not. So if you are able to complete the sessions like this, if you are comfortable with that कि अभी हम लोगों को ये समझ में आता है, हम लोग ये कर सकते हैं, then you can continue. Yes guys, so that's the reason why we are keeping the demo sessions. So please understand it, and believe me, this is not that much difficult. If you are learning properly, then it is not difficult, that much difficult, so easy to understand. और हमारा तो ऐसे ही है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे हम लोग इसको, और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा. सो विल कंप्लीट इट द सेम मैनर दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. तो कुछ दिक्कत अभी तक नहीं आई है तो आगे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? बट द डिस्क्लेमर इज दैट यू नीड टू रिवाइज डेली सेशन ऑन अ डेली बेसिस. तो डेली आपको करेंगे तभी ये कुछ बेनिफिट देंगे, अदरवाइज देर इज. अभी तो ऐसे है कि AWS बहुत मैच्योर हो गए हैं, ठीक है? तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है नहीं कि आपको इमीडिएट जॉब कोई भी दे देगा ऐसे ही थोड़ा बहुत पता है तो आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. बट वंस यू गॉट दैट पोजीशन, देन यू विल बी लाइक वेरी गुड इन अ मार्केट, राइट? सो एक अच्छे पैकेज के साथ आप मार्केट में रह सकते हो, एंड बिलीव मी दैट दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू लर्न. थोड़ा सा एफर्ट देने पड़ेंगे आपको, ठीक है? So we will stop at this point, guys, and tomorrow we will start the session on the same time, right? Okay, guys, thank you for attending this session. We'll continue tomorrow.